Namaskar all my lovely students. So as you know that we are doing chapter number 3, the ruling the countryside. It's very interesting topic. In last lecture we have discussed about the indigo cultivation. What was the indigo? Why the Britishers want to grow indigo in India and what problems faced by the indigo cultivators, niche cultivators and rarity cultivation. So all things which we have discussed, now it is the last part of your chapter. What was the result of these all things? When they collect the revenue, they have taken some reforms also, and they are also trying to collect the more and more revenue from the peasants. But now it's time to the rebellion. Rebellion means revolt होता है या फिर आंदोलन कह सकते हैं. जब कोई भी चीज एक्सेस होती है, किसी के साथ बहुत डोमिनेशन होता है, तो कहीं ना कहीं विरोध करने लगता है, यानी उसे प्रोटेस्ट करने लगता है. Now it's time to the cultivators how they protest to the Britishers that they refuse to grow the indigo. कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि अब वो इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक. आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स अकॉर्डिंग टू योर बुक. सो फर्स्ट, इन मार्च 1859, नाउ रिमेंबर दिस डेट, March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. After the before 1859, they are facing so many problems. So last, the thousands of the ryotis of the Bengal, they refused to Britishers कि they will not grow the grow. अब वो indigo grow नहीं grow करेंगे. Next was Ryot refused to pay planters and attack the indigo's factories. Now about the रियोटीज की प्लांटर्स जो है उनको वो क्या देते थे, टैक्स देते थे. सो दे रिफ्यूज टू रियो टू पे द प्लांट. हम उनको जो है टैक्स देने से उन्होंने मना कर दिया. अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज, उन्होंने जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उस पर अटैक किया. रियोस वर दे विल नॉट टेक एडवांस टू सो द इंडिगो फॉर नॉट बुरीड बाय द प्लांटर्स. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्शन था वुमेन्स का, है ना, जिन्होंने सपोर्ट किया. वो भी फैक्ट्री गई, जो भी उनके पास थे, जो घर के चम्मच बर्तन वो सब लेकर वो फैक्ट्रीज पहुंच गई. प्रोटेस्ट करने लगी कि ना तो वो कोई टैक्स पे करेंगे और ना ही वो कोई एडवांस लेंगे. किसके लिए? इंडिगो ग्रो करने के लिए. उन्होंने सबने किस पर अटैक किया? जो इंडिगो की फैक्ट्रीज थी बहुत सारी वहां पर. Next is the indigo rayos had the support to the local zamindar and village admin. Now come to the previous topic कि Britishers forced to zamindar that they collect the more and more revenue from the peasants. But that time the famine हमने बात की थी, famine की 70 में बहुत बड़ा जिसमें जहाँ पे उसकी 1/3 जो population wiped out हो गई थी. Still they were forced to the collecting revenue. So zamindar and village headman was also very disappointed with the Britishers. So they support to the indigo जो cultivators को जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनको पूरा सपोर्ट मिला कि जमींदार का, विलेज हैंडमैन का, इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे इन सारी चीज़ों से. फाइन. नेक्स्ट इज आफ्टर द रिवोल्ट 1857 गवर्नमेंट वाज वरीड अनदर पॉपुलेशन रिबेलियन. अब यहाँ पर मैं थोड़ा चैप्टर से अलग जाएंगे. 1857 रिवोल्ट सबको पता होगा, सिपोही मूवमेंट जिसको हम कहते हैं. इंडिया का सबसे इट इज नॉट ऑल्सो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिया. पहला स्वतंत्रता अभियान कहा जाता है इसे. जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, सो इट वाज स्प्रेड इन द वाइड एरिया एंड ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू कंट्रोल देम. और बहुत ही मुश्किल से उसे कंट्रोल किया था उन्होंने 1857 के बाद. नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर एनी अनदर रिबेलियंस. अब वो तैयार नहीं थे क्योंकि 1857 के
India companies order is finished here and directly India come into the ब्रिटिश एम्परर, ठीक है, सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है खत्म हो गया। नाउ दिस टॉपिक इज अबाउट द दैट वर्स कि आफ्टर 1857 गवर्नमेंट वाज वरीड टू अनदर पॉपुलर रिबेलियन, कोई गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो दूसरे किसी रिबेलियन के लिए तैयार नहीं थी। सो दे सेट अप द इंडिगो कमीशन, उन्होंने एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया। ये बात कही गई कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उन्हें समझा जाए, सुना जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, यानी प्रॉपर प्लानिंग की गई उनकी बातों को सुनने के लिए। एंड आफ्टर द रिबेलियन इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, और इस रिबेलियन के बाद बंगाल में उसका जो प्रोडक्शन था वो खत्म हो गया, एक तरह से कोलैप्स हो गया, क्योंकि फार्मर्स आर नॉट रेडी टू ग्रो द इंडिगो, उनकी बात नहीं सुनी गई। एंड शिफ्टेड टू द बिहार, जो प्लांटर्स थे, जो कुछ प्लांटर्स थे जो इंडिगो ग्रो करते थे, वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए, बिहार में शिफ्ट हो गए, वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगे। लेकिन अब बट नाउ द इंडिगो जो ग्रो हो रहा था इंडिया में, स्पेशली बंगाल में, वो क्या हो गया, खत्म हो गया धीरे धीरे। सो दिस आर द पार्ट ऑफ द रूलिंग द कंट्री साइड की, कंट्री साइड से विलेज पीजेंट्स जो भी रूल किया, जो भी पॉलिसीज बनाई, जो भी सिस्टम थे मारवाड़ी इंडिगो देन रिबेलियन, तो इट वाज नॉट वेरी इजी टू रूल इन इंडिया फॉर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इजी नहीं था कि यहाँ पर रूल करना, बट उन्होंने ये चीज़ें की, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनके पास, तो उन्होंने चीज़ें गलत भी की लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म भी किया। Now your chapter is over. Now I have mentioned some important dates related to this chapter. So please remember these all dates. I am explaining it one by one. So first date we start with the chapter. Our chapter started with this date, 12 August 1765. What happened? The Mughal emperor appointed East India Company. Fine. ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ दीवान ऑफ बंगाल। मुगल एम्परर ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किसका ऑनर दे दिया, दीवानी डिपार्टमेंट। दीवान डिपार्टमेंट मीन्स फाइनेंशियल अथॉरिटीज केम विद द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 12 August 1765. क्लियर? नाउ सेकंड है 1770. फाइन। The terrible famine that hit Bengal, बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आया, जिससे बनकर जो पॉपुलेशन है वाइट आउट हुई, बहुत बड़ा डिजास्टर कह सकते हैं दैट टाइम को, ठीक है, 1770 the terrible famine occurred in Bengal. Next is 1792 to 1827 is the long duration. The Rayotwari system was introduced in the presidencies of Madras and Bombay. फाइन। तीन प्रेसिडेंसीज के बारे में हमने किया है, फर्स्ट वाज द बंगाल, सेकंड वाज द मद्रास एंड थर्ड वाज द बॉम्बे। सो वहाँ पर भी रेलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। देन 1793 द लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल, ठीक है, दैट टाइम। फाइन। Lord Cornwallis introduced the permanent settlement system. He introduced, अगर पूछा जाता है, who introduced the permanent settlement system in India? So answer is Lord Cornwallis was the Governor General of that time. Fine. Now next is 1822. The Maharwari system introduced. कौन सा system introduce किया गया? Maharwari system. Now last is 1859, जो अभी हमने किया 1859, the Blue Rebellion of the Indigo cultivators, कि किस तरह से जो ब्लू रिबिलियन हुआ इंडिगो कल्टीवेटर्स ने किया उसके बारे में। सो आई होप दिस ऑल चैप्टर्स अंडरस्टैंड बाय यू and remember all topics and dates, important dates also. So students, after the some important dates and events of this chapter, I am explaining some words which again and again come into your chapter. So you should know what is the actual meaning of that particular words.
So first word is countryside, which is the name of your chapter also. As I told you, countryside means rural area or villages. Fine. Countryside means rural area and villages. Remember these. Second word is mahal. Mahal means village or group of village. Both are known as the mahal, where Mahalwari settlement is introduced. Fine. Mahal means village and group of villages. Next is rayot. What is the rayot wali system हमने किया था. So rayot means farmers and cultivators. In the sense of the producing indigo, we have discussed this word rayot. Rayot means farmers and cultivators. Those grow the indigo. नेक्स्ट इज इंडिगो. इंडिगो के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है. अ प्लांट दैट प्रोड्यूसिंग ब्लू कलर. एक ऐसा प्लांट जिससे कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा होता था? ब्लू कलर. एंड वो किस काम आता था? दे आर टेक्सटाइल जो होती थी, कॉटन टेक्सटाइल, उसको डाई करने में, कलर करने में उसका यूज किया जाता था. फाइन. जिसकी बहुत ग्रेट डिमांड थी होल ओवर यूरोप में. नाउ नेक्स्ट टर्म इज बोर्ड. ये हमने नहीं किया था, इसको ध्यान से सुनेंगे. बिफोर द प्लांटेशन ऑफ द इंडिगो. इंडिगो के प्लांटेशन से पहले एक ऐसा प्लांट था वोड, जिसका नाम था वोड, जिससे एक वायलेट कलर और ब्लू कलर जो डाई है वो प्रोड्यूस की जाती थी. और ये जो प्लांटेशन होता था वो सिर्फ कहाँ पर होता था? यूरोप में, नॉट इन इंडिया. इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ इंडिगो. उसके बाद इसका जो कल्टीवेशन है वो तो बहुत कम, क्योंकि उस वक्त बहुत कम भी होता था और बहुत एक्सपेंसिव था. सो व्हाट अ प्लांट दैट प्रोड्यूस वायलेट एंड ब्लू डाई, जो क्या प्रोड्यूस करती थी? वायलेट एंड ब्लू डाई को प्रोड्यूस करता. सो ये भी किससे रिलेटेड हो गया? इट वाज रिलेटेड विद द इंडिगो. फाइन. बोथ आर द प्लांट्स that produce the blue color, but wood is also produce the violet color also. Fine. Now next word is slave. Slave means होता है गुलाम या दास. A person who is owned by someone else. एक person जिसे खरीद लिया गया है किसी के द्वारा, और he or she can do anything whatever his owner want. वो सारी चीजें करता है जो उसका ओनर चाहता है, उसको हम क्या कहेंगे? slave. Fine. Now next term is the गोमास्ता. ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एजेंट्स होते थे, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, जो भी एजेंट्स होते थे किसके? हम यहाँ पे इंडिगो के सेंस में बात करेंगे. फाइन. सो जो एजेंट होते थे, जो कन्विंस करते थे फार्मर्स को क्या ग्रो करने के लिए? इंडिगो. सो एजेंट ऑफ प्लांटर्स इज नोन एज गोमास्ता. क्या कहा जाता था उन्हें? गोमास्ता. They are the agent of planters. Now next and very important, and we have start a chapter Diwan. ठीक है? Diwan means chief financial administrator. जो भी दीवानी डिपार्टमेंट हमने भी फर्स्ट स्टार्टिंग की टर्म्स में किया था. August 1765, the Mughal emperor appointed East India Company as a Diwan of Bengal. तो दीवान क्या हो गया? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, जो सारे डिसीजन लेगा रेवेन्यू से रिलेटेड. नेक्स्ट इज सट्टा. सट्टा एक हिंदी वर्ड भी है. कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट. फाइन. कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो हमने लेआउट वाली जो कल्टीवेशन और लेआउट कल्टीवेशन में पढ़ा था, जो सेकंड था लेआउट वाला, इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस. कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था, एक एग्रीमेंट होता था जो दोनों को ही पूरा करना पड़ता था. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. सो फर्स्ट you will start your work in your notebook with the important dates and events. Then you will do all key terms. Some key terms are in your book also. Insist of it. इसके अलावा अगर कोई key terms है, plantation होगा, तो उस पे आप ऐड कर लेंगे. फाइन. ये मैंने आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा है. जो भी की टर्म्स हैं जो हम कर चुके हैं वो आप नहीं करेंगे. इसके अलावा जो भी की टर्म्स आपकी बुक में है वो आप इसके साथ करेंगे. फाइन. आफ्टर दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. आई एम सेंडिंग द PDF also. So if you want
watch and listen all lectures. It is very easy for you to understand the topics. So please all lectures watch and listen carefully so that concept is clear to you. Fine. Thank you and have a nice day.